One, go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू शो एलिक्सर फॉर बियर। यहाँ पर मैं साहिल गुप्ता, मेरा दोस्त पुष्कर गुप्ता, हम दोनों यहाँ साथ आए हैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। वी आर नॉट वी आर नॉट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एनीथिंग। हम लोग यहाँ पर बस इन अ सेंस अगर बोल सके तो दो डिसअपॉइंटमेंट है जो एक पॉडकास्ट पे आके अपनी ज्ञान देने वाले हैं। बेसिकली ये होने वाला है इस पे। और आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में इंडिया में, जो इतना बड़ा हवा बना पड़ा है इसके पीछे। तो क्या लगता है? हम्म तो जब हम मैं अपने दोस्त के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आई थी वो एक लाइन थी, अभी मेहनत कर लो, बाद में मजे ही मजे। ये पुष्कर भाई मुझे बताओ, आपने कितनी बार सुना ये? सिर्फ सिर्फ यही नहीं, 10वीं का बोर्ड्स दे दो फिर मज़े मज़े, फिर उसके बाद 12वीं का बोर्ड्स दे दो फिर मज़े मज़े, कॉलेज अच्छा मिल गया उसके बाद मज़े ही मज़े, जॉब अच्छी मिल गई मज़े ही मज़े, लड़की हमारे मन से देख लो फिर मज़े ही मज़े। सो दिस दिस सेइंग आई थिंक everyone in India must have received at least once. और आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स इज वन थिंग, वन प्लेस वेयर एवरी पेरेंट्स हैव पुश्ड देयर किड्स टू से, हैव सेड दिस इन वन वे, शेप और फॉर्म, एट लीस्ट। कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल सॉर्ट ऑफ अ थिंग एज अ हैपेंड टू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया फॉर श्योर। तो वी वांटेड टू डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक एंड सी कि यार ग्राउंड रियलिटी क्या है इन सब में, हो क्या रहा है यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट द पॉडकास्ट इज About. ऑन टुडे। या सो सबसे पहले पुष्कर भाई, मैं ना आपसे थोड़े से सवाल पूछता हूँ। हम्म? Sure, और sure. फिर मेरे को आप बताना कि क्या मतलब, कहते हैं ना, क्या लगता है आपको। तो आपको क्या लगता है, कितने लोग जेई की, क्या कहते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं हर साल? आई नो दिस इज़ अ सीरियस टॉपिक और बहुत रिलेटेबल है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत मिडिल क्लास के पेरेंट्स भी पुश करते हैं बच्चों को फॉर जेई एंड ऑल, बट मैं वन ऑफ द बच्चा हूँ जो फिटजी गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम। हम्म। वी हैव गॉन थ्रू दिस सेम थिंग बोथ ऑफ अस, बट जस्ट टेक अ गेस, 2025 में कितने कैंडिडेट्स हैं जनवरी में जेई मेंस में? सो आई थिंक मेरे समय में आई रिमेंबर इन 2015, यू आर हम्म टॉकिंग अबाउट 2025, सो हम्म। बहुत चीज़ें कंसिडर करने के बाद आई गेस 20 लाख, 18 to 20 लाख की रेंज में बच्चे इनरोल किए होंगे। मेरे समय में 13 लाख किए थे, और आबादी तो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अ, कुछ ज्यादा ही आपको, क्या कहते हैं ना, हमारी आबादी पे भरोसा है। पिछले 10 साल में आबादी बढ़ी नहीं है इतनी ज्यादा, अच्छा। बट द नंबर इज स्टिल 13.8 lakhs। हाँ, तो 14 लाख लोग जेई में दिए इस बार जैन में। या देंगे बेसिकली। हम्म हाँ। यूपीएससी का सेम नंबर है, 11 से 13 लाख रुपए, 13 लाख बच्चे देते हैं हर साल। ये सिर्फ यूपीएससी, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम तो बहुत है। और जो कैट का है, उसमें 3 लाख बच्चे, क्या कहते हैं ना, इनरोल करते हैं। 2023 में एग्जाम दिए थे। हाँ, तो देख लो, लैक्स में है ये सारे। एंड द सीट्स, अगर जेई एडवांस में या जो आईआईटी बॉम्बे इन सब की बात करेंगे, तो सीट्स यार नॉट इवन 5,000। 5,000 भी मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, सीट्स उससे भी ज्यादा कम होती है। अगर हम अच्छे कॉलेजेस की बात करें, आईआईटी और इन सब की, तो जो जेई मेंस का, क्या कहते हैं ना, क्वालिफिकेशन परसेंटेज है, वो 0.003% है भाई। मतलब 3,000 people eventually gets a good like गुड college कॉलेज, हाँ। out of जेई मेंस। और फिर यूपीएससी और कैट में तो और भी बेकार हाल है। तो देख रहे हो, मतलब कंपटीशन यार नेक्स्ट लेवल है। आई थिंक राइट नाउ, मतलब अभी मेरे को देख के इतना अमेजमेंट होता है, बट जब हम बच्चे थे, हमें पूरा का पूरा वो होता था भाई कि करना ही करना है, कैसे भी करके ये वो। बट लुकिंग एट द नंबर्स, इट वाज ऑलवेज स्टैक्स, मतलब इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू डू वेल इन जेईई करेक्ट करेक्ट एडवांस एंड करेक्ट ऑल करेक्ट। ऑफ दीज एग्जाम्स। राइट। वो वाली चीज है।
अब मैं ना आपको एक और क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं पूछता हूँ आपसे। व्हाट डू यू थिंक इज द क्या कहते हैं ना सुसाइड रेट अमंग स्टूडेंट्स? हम्म। अच्छा, उससे पहले मुझे आप मेरे को बताओ कि डू फार्मर्स सुसाइड मोर इन इंडिया और स्टूडेंट सुसाइड मोर इन इंडिया? I guess students suicide more in India because एंड while I was in college in VIT, I think I should have not taken the name of the college in the podcast, but एक कॉलेज है ABC। हाँ, हम eh, जहाँ पढ़े हैं वहां पर। correct. हम्म। So me and Sahil are from the same college. हम्म। We should tell our viewers. So हाँ। I don't know about Sahil, but I have received. I mean, I've seen like a two or three suicide. मतलब अपने आँखों से अदरवाइज आई हम्म। हैव आई व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई इट्स अ क्लोज्ड हम्म। कम्युनिटी तो कोई भी खबर हम्म। होती है आग की तरह फैलती है सो हम्म। एटलीस्ट मैंने 18 ऐसी न्यूज़ इन व्हाट्सएप ग्रुप सुनी थी वेयर समवन फ्रॉम वीआईटी ड्यूरिंग द पीरियड आई हम्म। वाज इन वीआईटी सुसाइडेड हम्म। आई मीन या तो फार्मर सुसाइड के बारे में द रीजन व्हाई आई आस्क यू दिस यार, फार्मर सुसाइड इज a lot more covered in news, but student suicide no one covers। आई थिंक मैं आई आपको हर्ड कुछ stats दे। समवेयर I heard हम्म। somewhere that every 42 minutes one student suicide. सो बेसिकली मेरे पास क्या कहते हैं ना जो नंबर्स है उसमें हर दिन में 35 बच्चे सुसाइड करते हैं, कमेंट सुसाइड करते हैं। दिस इज ऑफिशियल रिपोर्ट। So I guess somewhere around 30 to 40 minutes के बीच में एक बंदा चला जाता है. हाँ, एंड Just दीज आर द leaves. ऑफिशियल नंबर्स। These are हाँ, the आई official वांट टू। numbers. हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अनऑफिशियल नंबर्स तो भाई क्या कहते हैं ना बहुत कम होंगे। ऑफिशियल नंबर जब 40 मिनट आ रहा है, जस्ट इमेजिन द अनऑफिशियल नंबर्स। दैट इज हाँ, वन थिंग, एवरी 40 मिनट्स स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड इन इंडिया। सेकेंडली, 2013 से 2022 के बीच में स्टूडेंट सुसाइड हैज इंक्रीज बाय 64%। जस्ट 64. इमेजिन। Yeah, 64। Just I don't I shouldn't be laughing at this, but just imagine अगर कोई चीज 10 साल में 64% इंक्रीज हुई होती तो and कुछ there तो is no गड़बड़ है. outrage about it। And there is no outrage about it। कौन बात कर रहा है इसके बारे में? Do you see anyone talking about students suicide on mainstream or even not mainstream? या कोई कोई अपने पॉडकास्ट पे उस पे भी डेडिकेट होके बात करना चाहते हैं इन सब के बारे में? आई कांट फाइंड एनीवन टॉकिंग रेगुलरली और इवन पुटिंग अ फोकस ऑन So इस पे मेरा एक क्वेश्चन है साहिल फॉर यू. इट। Do you really think anyone cares about you or me? आई मीन And also, do your parents like care least about your mental health when they put pressure? आई मीन देखो, आई थिंक ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन इन वन वे और फॉर्म। बट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना यार, तो पुष्कर भाई आपको भी पता है, कितना भी केयर और लव हो, प्रेशर तो हर कोई पुट करता है घर वाले। चाहे फिर Uh, वो मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, छोटा भाई भी प्रेशर पुट करता है। छोटे Correct. भाई बहन भी बड़े की तो छोड़े दो, छोटे भाई बहन भी प्रेशर पुट करते हैं। तो प्रेशर तो हर जगह से होता है। हाँ, पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इन सब के लिए ना तो स्टूडेंट्स आर जस्ट व्यूअर्स। वो Right. लोग छोटा सा कुछ बना देंगे भाई जिससे बच्चे खुश हो जाए, और जो उनको फोकस करना चाहिए वो भूल जाए। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट आई डोंट रियली थिंक कि कोई एक्टिविस्ट हो, कोई सेलिब्रिटी, चलो वो उनका तो काम नहीं है। हाँ, बट नो पॉलिटिशियन केयर्स, नो वन हैज पुट क्या कहते हैं लेजिस्लेशन लाए या कुछ लाए to be कि हमें we care about the student suicide and everything. We had 64% increase in last 10 years and no one is talking about it. So you can imagine, I don't think anyone really cares यार। वो मेरा तो यही मानना है। That's very sad, but Sahil, you have always known that I have cared for you. Yeah, I knew that from the college you Y- always cared about me।
And That remember I तभी तो पॉडकास्ट सार रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई. That's a separate but topic. but I remember those days when we used to go to Hmm. night canteen and have patties सारे or राज आज puffs. ही मत खोलो. Let's keep a lot of things for separate. But one thing I wanted to talk about this competitive exam is कि क्या कहते हैं ना, let's okay, you're preparing for an exam for 2 years. I remember this distinctively कि for those JEE advanced JEE का जो मैं कर रहा था, for 2 years I was just enthralled in this. I couldn't do anything or anywhere else. It was so कि इसी पे फोकस करना है, इसी पे फोकस कर रहे हैं. There is nothing more outside of it. And the worst thing I feel like is even after focusing on that, if I don't get what I want at the end of the day, those 2 years are wasted. I don't learn any skills. जैसे engineering किया आपने और मैंने, हाँ, Correct. तो we learn something out of engineering, even though we didn't learn the technical aspect, but we got something out of it. कि how to rationally think, how to logically think, what are the different कैसे load manage कैसे करना है, all of those things, living alone many and many all of many that. many dynamics, many हाँ. dynamics, friendship के dynamics, relationship हम्म. का dynamics, और हम्म. basically ग्रुप्स में पॉलिटिक्स वगैरह भी बहुत सारी चलती थी, हम्म. तो उससे तो बहुत कुछ सीखा. बट ऑन व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इज स्किल्स. सो हम्म. मुझे नहीं लगता यार व्हाट आई एम डूइंग टुडे, हैविंग अ जॉब इन XYZ कंपनी. I think I was हम्म. never taught. I was never really gone through anything of that sort, which today I do. And I'm not saying I'm happy with my job, but ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली जो during कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने किया correct, उसका कुछ रियल लाइफ इफेक्ट नहीं है तुम्हारे. basically भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम कहीं नहीं लगा रहा हूँ. ओके, दैट्स द बेस लाइन. हाँ. नॉट इवन जस्ट इंजीनियरिंग, इवन यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हो या कैट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, यू माइट पुट दो स्किल्स टू यूज वंस इन अ वाइल, बट कोई तुमसे आके नहीं पूछ रहा कि भाई क्या कहते हैं ना, मुगल्स ने कब इन्वेड किया था, क्यों किया था, एंड ऑल ऑफ दोस शिट. नो वन इज गोइंग इंटरेस्टेड इन दैट यार. एवरीवन हैज मेड देयर ओन माइंड. And there's if you fail in that, those things that you learn are nearly obsolete in most cases when you go out into the real world. Computating and everything fine, थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, but no one is hiring for you for that. वो लोग बाकी चीजों पे हायर करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अनदर साइड कि यार मेहनत करो 2-3 साल या जितने भी साल है, एंड यू डोंट गेट लाइक आई रिमेम्बर अ फ्रेंड जिसने जिसके क्या कहते हैं ना रिलेटिव में 4 भाई-बहन थे, चारों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, चारों की नहीं हुई और चारों फिर क्या कहते हैं ना वेले बैठे थे. इन द लेट 20s no one had a job in their family and the father had to work and earn for all of those. Just imagine the sad state of affairs. Correct. I can see that. Also, uh, we have to blame our education system also, because starting से घर पे बोला गया है पास्ट जो भी है उसको भूल जाओ, हुँ. get ready for tomorrow, prepare for future. But then you are teaching history in 6th, 7th, 8th, and 9th. What is this? Yeah, waste of time. I think it's really is not useful to any of us in any way. Competitive exam यार is So Sahil, मतलब I told you, na, there is nothing you can get out. Yeah. Hmm. I was telling you, na, I am preparing for data science and I'm almost Hmm. done. So Hmm. I will be changing my career from business analyst to data scientist. Hmm. So I think I have given data science 2 or 3 months to learn the all the, I mean, relevant skills right now, which I'm going to use in office. Okay. Hmm. If I would have given 18 years to anything else, 18, not 18, Hmm. 12 years, 12 years of school, or let's say 2 years of college. Uh, I was 4 years in college with you, but 2 years of college was Hmm. street smart and everything else. Let's say 2 years of college that was wasted time in studying old Hmm. घिसा पिटा अपना course, which is Hmm. from way back. Hmm. So
मतलब मैं समझ रहा हूँ कि those things, very हाँ, few things you get out of it, and on top of that you have to do competitive exam की तैयारी यार, जो कि तुम्हारे स्कूल में हेल्प नहीं करने वाली, कहीं और हेल्प नहीं करेगी इतनी ज्यादा, and you put all of your time and energy into that, और कुछ नहीं होता. I can understand the frustration people have यार. We have gone through, तुम बता रहे थे तुमने एक क्या कहते हैं ना, one of those school classes, extra school classes तुमने ज्वाइन की थी, फिर से आकाश वाली, वो सारी चीजें. या तो that was very bad experience actually उस हम्म. because अभी उस स्टेट पे मेरा माइंड ऑलरेडी दो जगह पे लग रखा था भाई स्कूल में भी मुझे हम्म. अच्छे मार्क्स लाने हैं देन आई हैव टू परफॉर्म इन फिजी और दी हम्म. एंड आकाश टाइप ऑफ कोचिंग्स हम्म. सो बेसिकली उसमें कॉम्पिटिटिव के लिए जेई के लिए प्रिपेयर कराते हैं बट आई डोंट नो व्हाट लेवल इज़ दैट भाई एकदम बाउंसर जाता था उसकी हर क्लास हाँ मतलब I remember this conversation. So initially I didn't wanted to pursue it, but later on I decided कि यार let me give a try. So I was just 2 weeks behind, and even 2 weeks behind, it was difficult for me to catch up with those 2 week की जो classes में पढ़ाया गया है. Because it was so one thing after another. आज ये किया है, ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करो, अगले दिन ही होगा. And it's just one punch coming after another and another, and if you skip a beat, तो भाई हो गया. और अभी तो हम मेन टॉपिक पे आए ही नहीं है. We have not talked about the elephant in the room, कोटा. कोटा भाई, कोटा is another. क्या बोले, कोटा हो गया, मुखर्जी नगर जो दिल्ली में यूपीएससी की, वो सारे जो ब्रीडिंग एरियाज है, लाइक वहाँ जो चीजें होती है, आई थिंक दैट्स अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ. बट बट द एनवायरनमेंट इज आल्सो वेरी टॉक्सिक. लाइक जस्ट इमेजिन, आपने एक साल ब्रेक लिया, या यू आर नॉट, योर फ्रेंड इज नॉट डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज यू, या वो अपनी जॉब लेके कुछ कर रहा है, हाँ, एंड आप पूरी रात बैठ के भाई क्या कहते हैं ना, आईआईएम में मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे हो, हाँ, और वहाँ आपका दोस्त स्टोरी डाल रहा है कि भाई ऑफिस के बाद पार्टी कर रहा है वो लोगों के साथ. द करेक्ट इमोशनल डैमेज यार, आई थिंक एवरीवन हैज बीन इन दैट सिचुएशन जो यहाँ किए उस पे. These things are immeasurable. No one talks about that. There's no like voice to these sentiments. वो वाली चीज है. Have you had any similar experience, भाई? many a times I will tell you when it started actually for Hmm. me it started very early on like around when I was in class 4th or 5th I guess. So what used to happen that my mom was very strict. I mean, if it's like 2 months to exam, you have to be studying. She just used to just get me away from all the things I can enjoy, like Mhm. playing games or anything. But that's Mhm. okay. That's what a parent should do. Mhm. But at that time, before that, I used to play football from 4 to 5, Mhm. 4 to 5 p.m. in some park. Okay. So then she banished me from that. And that was the first time Mhm. I understood that this is not right. Something is not right. Mhm. I mean, I was Mhm. skeptical at that time, but I had no answers and I had no knowledge or Mhm. my brain was not that developed to understand what was going on. Mhm. Because I mean, I'll mhm. tell you, Sahil, if you give me like a hour of play, Mhm. then after that going, I will be able to more concentrate on my studies better. Mhm. So that Oh यार. 1 hour of physical activity, recreational activity is important for me. I mean, to it's not like I can just study straight 12 hours. I don't know what Mhm. is this obsession of Indian people. I mean, we people that we want to clock hours. We don't want to. This is most easy example of quality versus quantity. You Mhm. understand, na?
सो वी वांट टू No, क्लॉक आवर्स कि आज मेरा बेटा 12 घंटे पढ़ा, आज मेरा बेटा 8 घंटे पढ़ा, बट या व्हाट, मेरी बेटी 8 घंटे पढ़ी। या बट at the end, हम्म, hours doesn't matter. It's how productive you are in that हम्म, moment. हाँ, आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द like upbringing जो हमारे पेरेंट्स की हुई है, they were grown in an environment where someone who studied hard, they got a they got a job, they move ahead, they got farther in life. Huh? And this Correct. was a not a it was widely held notion, if you study, you will get good, you will get ahead in your क्या कहते हैं ना in your life. So every parent was कि हम अपना पेट काट लेंगे, we would sacrifice things on our end, but we would give our kids the best education. And when you are pinning your hope, you're pinning your success on your child, huh? When you're sacrificing, and when he or she doesn't do or doesn't achieve the same, let's say, result that you think like, or the neighbors kid Sharma ji ka beta whatever, you get frustrated. So it's common for them to get frustrated कि मैं यहाँ क्या कहते हैं ना 2 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ आ रही हूँ तेरे लिए और तू ये कर रहा है काम नहीं कर रहा पढ़ाई कर चप्पल मारी वो. So they only knew one aspect, यार study hard you will get through. So they are not wrong in that thing. What they should understand is not everyone is यार क्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. हर कोई नहीं जा सकता जेई एडवांस में. हर कोई आईआईटी बॉम्बे का नहीं है. हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट हुए हैं. 13 लाख बच्चे देते हैं जेई. हर कोई थोड़ी क्या कहते हैं ना Engineer है, आईआईटी right? बॉम्बे मटेरियल. हाँ. Correct. Maybe वही वाली some बात. of them are artists, some of them are musicians, but हम्म. they are not polished or they are not discovered yet. वही वही वाली बात है. दिस ऑब्सेशन ना आई थिंक इट. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दिस ऑब्सेशन विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हमने इसको एक पेडिस्टल पे रख दिया है कि भाई Correct. कैट निकाल लो एमबीए करने के लिए, यूपीएससी निकाल लो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जेई है इसके लिए. हाँ. एंड पीपल आर आई रिमेम्बर अ लॉट ऑफ स्टोरीज या बहुत पर्सनल स्टोरीज आई डोंट वांट टू रिवील बट एवरीवन नोज और सीन समवन who was so bright before such things, and once they go through this grind of competitive exam they are not the same. They are They are not the just same. a Right. shadow of themselves. Yeah. You are right. Because they feel like they have failed in life. And when someone feels that about them उनका confidence है कभी वापस नहीं आता. It's such a Self-esteem. हाँ. Self-esteem and This is such a dark hole here कि हम क्या बोले. I think I have seen a movie. This movie, सुशांत की मूवी है, छिछोरे करके. Have you seen that? हाँ हाँ. उसमें उसमें एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई, उसके बारे में है. काफ़ी अच्छी है मूवी. आई मीन हम्म. जिसने भी हमारे व्यूअर्स में जिसने भी नहीं देखी है, प्लीज़ डू वॉच. तो हम्म. उसमें बेसिकली ऊपर ऊपर से बताया है, नो स्पॉइलर अलर्ट्स, बट हम्म. ऊपर ऊपर से ऐसा बताया है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. अगर हम्म. यूपीएससी नहीं निकला या अगर जेई नहीं लिखना, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. Maybe हम्म. you were great at singing, like I was very हम्म. enthusiastic about singing and football. हम्म. So maybe if you are enthusiastic about music in your early days, pursue that. Hmm. Yeah, I think I agree to that sentiment. Yeah, you need to upskill also on the side. Don't go all in into this one thing. हाँ, Have a little क्या कहते हैं have a more rounded. अब जैसे इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस आया ना, हाँ. वैसे स्टडी में भी है थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस लाओ. हाँ. Correct, correct, Do correct. a couple of things. Play someday. Do your hobby. Develop a skill. If you just study all day ना, it's like कि ऐसे the best way I can explain to you is you go to a farm one day. हाँ. तुम वहां पर सारे अपने क्या कहते हैं ना पौधे तुमने निकाल लिए. हाँ. और जब वापस आ रहे थे तुम्हें वो कलेक्ट करके पैसे देने के लिए चोर ने आके वो कोई और ले गया तुम्हारे. सो योर होल डे वर्क इज रून. एंड नो मैटर हाउ गुड और हाउ हैप्पी और वॉट एवर सारी मेमोरी खराब हो जाएगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू फेल. And this was one day. Imagine this happening for 2 years in JEE mains, 3 years in JEE mains, 4 years, 5 years, 10 years for some people in UPSC, three or Correct, four correct, years in. correct. I have heard हाँ. this kind of stories, yes. हाँ.
So you would, yeah, there's no hope. So the best thing we would suggest, yeah, is just to, because we have crossed that phase for now, is yeah, just upskill at the same time. If you're preparing for UPSC, upskill, do other things on the side also. Don't make it your whole thing कि यही है मेरी life or death. I know तुम्हारे जो teacher consultant वो सब बोलते हैं कि भाई do this, you would get, कहते हैं ना, they would show you dreams and all of that. That's fine. Sh- Having dreams and pursuing them is fine, but not everyone, would be able to pursue that. We just told you the acceptance rate. Just look at the acceptance rate. Yeah, not everyone is lucky enough to get it. Huh? There's very few people who put in the effort and all of that. So it's not easy, and always have a backup option is that always fine. क्या हाँ, बोलते हो पुष्कर भाई? correct, correct, correct. I mean, you should be able to understand at some point that this is not for you. Just because your parents are saying to grind, that you should grind for 10 years. After I mean, if you are looking for that only, and then you are going with that mindset, and then also you are not getting it for 10 years, then it means it's not for you, right? Hmm. Yeah, for sure. Yeah, for sure. I mean, after Also, the first 5 years, mm, you should have started doubting yourself that this is not for me. I can hmm. do better things. Hmm. And No, no, I sure believe that. you were saying someone who is clocking hours, and then he went to job, and I Hmm. mean, you were saying something about societal norms that इतना Hmm. इतना इतना पढ़ोगे, फिर इतना 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 काम करोगे, then Hmm. successful होगे. I think life is more than that, basically. Yeah, for sure. Life is much more than those Much things. Yeah. more than that, And because bhai, how if you're going on that path, then how you're going to maybe with your best friend, how will I take you, mm, Sahil, to a park and we'll just chill and talk about something? hmm. I mean, I want to do No, that. that though everything is important. Yeah, I think you should have a more rounded balance, as I said before. वो सारी चीजें important है. Or also we don't want to give a very negative connotation कि I don't pursue competitive exam or anything. No, Arey, no, do pursue even that. my parents told me that you should pursue, and I genuinely, Sahil, after my post graduation, I was not Hmm, getting a job for like 2 or 3 months. I was giving hmm, interviews, but I was not getting hmm, a starting job, because it was hmm, just after the corona period. It was some kind of hmm, recession was going on. So, hmm, so he, I mean, my father told me that you should try that. So, gate. not gate, UPSC. Oh, okay, okay, UPSC, okay. हाँ, Hmm. तो नहीं नहीं वो तो है ही. I think तो these things but are the backup. हाँ. after my job also, I was trying it. I tried it like Hmm, twice. I mean, hmm, बहुत दो एग्ज़ाम होते हैं, एक जुलाई में होता है, एक hmm, जनवरी में होता है, डिफरेंट hmm, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक इंजीनियरिंग hmm, hmm, सर्विसेज का होता है और एक सिविल सर्विसेज का होता है. सो hmm, आई ट्राइड बोथ, नहीं हुआ. मैंने पापा को साफ बोल दिया, भाई इट्स मेरे लिए नहीं है, नहीं हो पाएगा. मैंने hmm, मैंने खुद बोल दिया, hmm, भाई इट्स बेटर कि तुम वहाँ पे सरेंडर ही कर दो, बिकॉज hmm, दैट्स द ओनली वे पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड, आई गेस. hmm. Absolutely. और मतलब I think both of us agree to this is we are not saying कि don't pursue these exams. हम्म. What we are saying is कि it's, you know, don't put it as like if you fail, it's the end of the world or anything like that. Huh? Because the acceptance rate is very less. If you want to become and like work as a management consultant in a top firm, getting into IIM is the option for you. That's the only good option for you. Huh? So we are not saying कि don't give cat बेकार है मत करो ये सब. No, no, none of that bullshit. What we are saying is कि there are more things in life than these things. Hmm?
Correct. and you need to upskill at the same time while you are, you know, working on these things. If you just focus on these things, कुछ नहीं होगा. It would ruin your life because the acceptance rate, the experience, and all of that are not in your favor. Yeah, there are, and you don't have to trust that there are हाँ, more hundreds of more people you can go talk and they would say the same thing. यार बेकार experience था, इतना खास नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, and all of those things. So I would say कि भाई क्या कहते हैं ना, there are much more things in life than that, and competitive exams in general, if you look at, majority of the people don't get what they want. It's only a very small minority. So there is a good chance that when you go into these things are not going to work out with you. So when you know things are not going to work out in your favor, why do you, you know, put so much pressure? Just have an option B, जैसे वो पहले हम बात कर रहे थे उस चीज. That should be your only thing in life. I think that is the approach, and we believe like we should talk more about these things because it's not the end all and be all. वो वाला है. Sorry, I'm going on a ramble here, but I just feel like कि अगर बचपन में किसी ने मुझे बता दिया होता ना भाई करेक्ट, हाँ। कि ये चीज एंड नहीं है, इसके बाद भी होगी, फेल भी हो गए तो भी ठीक है ना, मैं काफी बढ़िया इंसान होता है, काफी इतने इमोशनल क्या कहते हैं ट्रॉमा नहीं होते जो अभी है. Hmm. So I have one story related to cat. हम्म. I have हम्म. given a lot of competitive exam, as you can see. या. I am the bakra of this scam. So what happened after my graduation? I was preparing for CAT for MBA, Sahil. हम्म. हम्म. So I enrolled some big big ass coaching with double quotes. ठीक है? हम्म. So it was a I mean expensive course. The first 6 months they were doing a crash course. Six, not 6 months, actually 8 months. They were doing a crash course where they'll prepare you for CAT. So ओके. and I'm not very bad at studies. I'm good because हम्म. base है. पहले अच्छा हम्म. लगता था, then it went. I don't know. I don't know. I have ADHD maybe. I don't know. So हम्म. क्या सीन था कि उसमें कैट में मेरे आई मीन मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करना था और दैट इज़ ओनली इन IIM अहमदाबाद. एंड ओके. IIM अहमदाबाद में एडमिशन किसी भी स्ट्रीम में लेने के लिए हाउ मच परसेंटाइल यू हैव टू क्रैक, साहिल, यू 99. यस हम्म. करेक्ट. मे बी 98.9 का हो जाएगा बट 99 was the was when I gave. So हम्म. अब मेरे आए 90.25 परसेंटाइल. हम्म. अब बताओ 90.25 परसेंटाइल इज इट्स गुड राइट, साहिल? You're better than 90% of the people. करेक्ट. बट हम्म. व्हेन आई विल टेल यू द स्टैट्स ना, you'll हम्म. if, your mind will flip. ओके. So you get 80 percentile and above when हम्म. you get 60 numbers out of 420 or 400 something. Okay, ओके. you get 90 percentile when you get 85 to 90 numbers, हम्म. 85 to 90 numbers in out of 400. Okay, 400 plus. हम्म. And हम्म. you get 99 percentile when you get 201 out of हम्म. 420. ओके. I mean, you see the thing. I got 90 हम्म. percentile in 90 number, but 99 हम्म. percentile का बंदे को लाना है 201 नंबर, more than double. The competition, yeah, the competition. I mean, Mm. I guess 80% के जो भी नीचे आते हैं भाई, I mean उन्होंने तो ऐसे तुक्का मार के आया होगा. समझ रहे हैं ये नहीं, द नहीं. लेवल हाँ, ऑफ हाँ. कंपटीशन. एंड Mhm. एंड No, no. मैं समझ गया भाई. हुँ, मैं मुझे थोड़ा इनरेज हुआ. आई डेंट गेट आई एम हुँ, अहमदाबाद. थोड़ा इनरेज हुँ, हुँ, हुआ बट मैं समझ गया भाई कि जो बंदा 216 ला रहा है
हम्म। भाई उसके लिए ही है कैड भाई, मेरे लिए नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। दिस आई थिंक इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। सो मैं समझ गया, ठीक है यार। आई मीन आई डू फ्रॉम सम समवेयर एल्स, नो इश्यूज भाई, तुम लोग कैट हम्म। ले जाओ भाई, आई एम हम्म। ऐश करो। बट देन आई वेंट सम अदर कॉलेज। सो हाँ, नहीं, और आई मीन इट्स a यार डेड ट्रैप, मतलब वी कैन गिव hundreds and hundred of stories and example here out to our listeners, बट मेजोरिटी के लिए नहीं है यार वो अच्छी। काफी कम लोग ही होते हैं जिनको क्या कहते हैं ना, दे गेट व्हाट दे वांट टू आउट ऑफ दीज कंपटीशन। वो यप। वाली चीज है। माय ओनली थिंग वुड बी, लाइक आई डोंट वांट टू एंड ऑन अ सैड नोट हियर। मैं बस एक ये बोलूंगा कि हमारा एक दोस्त हुआ करता था जिसने ऐसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी। ही स्पेंट 2 years इन अ हॉस्टल एंड उसको वहां पर बंदी मिल गई। हम्म। हम्म। तो एंड वी थॉट ड्यूरिंग अ कॉलेज पीरियड कि इस चोमू को तो नहीं मिलने वाली, ही इज द लास्ट वन टू गेट इट। सो देयर कैन बी गुड थिंग्स दैट कैन कम आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नो डाउट अबाउट इट, बट for majority of the folks it's not the case. You might face depression. First of all, you might start facing with pressure, then क्या कहते हैं ना, you see pressure from your family, from your friends who are doing better than you, then you fall into much more deeper depression कि क्या करे क्या नहीं करे, फेल हो चुके क्या, and those things just keep you down down and down। वो हाँ, it वाली will चीज। just bring you down and even down and even down until हाँ। you are like at the phase where you just don't care. हम्म। तो वो वाली बात है। या सो आई वाज सेइंग कि क्या कहते हैं ना, इट्स बेटर कि you focus on other things, you upskill at the same time. And this is a much more complicated. There are a lot more things we can cover here. We can go about and all of that. But for the time being, if you are in a situation or you know a close one who is in a similar situation, help them out. Mm. Tell them this is not the only thing. And I think we have not touched on this topic a lot, but both gender suffers from this, but I think the male gender who are being sourced at the कि अगर मैरिज करनी, एम करनी है, कुछ भी करनी है, पैसे कमाने हैं, you have to earn more and do shit like that, they face a lot of issues and suicide and all of that, वो वाली चीज। So I would say talk to people, even if there is no one to talk to, email us, we will help you, talk you out, but there are options, there are things beyond competitive exam even if you don't do well. That's the last thing I would like to say. that's great. That's a great. Yeah, you can reach us out at play.7 at Mm. gmail.com. It's our official Or you mail. can comment down below also. Yeah, we Let us will we know will your reply on experience and each your fun experience. Yeah. we will reply on each comment. And I know we don't have cameras yet. I wish we had cameras, but we'll be bringing that soon, Sahil, right? Mm. Yeah, yeah, for sure, for sure. We have a So, lot more things in store for our listeners. correct. So, on that note, we will take off today. Thank you for watching. I mean, thank you for listening, obviously.